Welcome back. Now, Varanasi's star MP, that is Narendra Modi, is going to be filing his nomination papers from his Karam Bhumi on May the 14th, that is tomorrow. What happens today is that the Prime Minister will be holding a roadshow, this on the streets of Kashi. Lot of preparations, lot of bandobast in place. On your screens, in fact, are images of how the entire city is getting decked up with the kind of preparations. There's going to be blowing of conches, sound of drum beats, chanting of mantras, all leading up to that big roadshow of the Prime Minister. That would also show us a glimpse of the achievements of the Modi government over the last 10 years. Do remember there are about 100 specific points that have been made to welcome the Prime Minister, and this is an entire roadshow that goes on for a good 5 kilometer long. In this, you also have a glimpse of the cultures of mini India and Uttar Pradesh that will also be seen. And do not forget this roadshow that begins from the Singh Ghat of Banaras Hindu University after garlanding the statue of Pandit Madan Mohan Malviya is going to be very, very keenly watched. What sources also tell us is that Amit Shah himself has been supervising everything, lot of preparations that have been in place. After the BHU, the Prime Minister would reach the Kashi Vishwanath Temple through the Baba Vishwanath corridor. This happens via Assi, the Sonarpur, the Jangambadi, Godulya, Bansfatak roads. And this is where he will then offer prayers at the Kashi Vishwanath Temple. Also accompanying him is going to be the Uttar Pradesh Chief Minister, Yogi Adityanath. He's going to be present on the Rath along with the Prime Minister during the entire stretch of this road show. This roadshow actually begins this evening close to about 5:30. It continues late till about 8:30. And we have our colleagues already joining us from Ground Zero, tracking every bit of detail that you need to know. I'm told both Pragya and Mohit are live with us. I'll go to Pragya first. Pragya, where about you at this point in time? And, you know, when you talk of Varanasi, you talk about the Prime Minister, there is another level of energy. The Prime Minister does not even campaign there much. He just goes to file his nomination and he does a road show, Pragya. Well, if you look at the hoardings and the poster banner that are dunning, all the buildings across Varanasi, they says that मोदी जी हम आपका स्वागत करते हैं, मोदी जी आप वाराणसी के हैं, आप हमारे हैं, आप हमारा परिवार है. This is probably the reason why Modi, Prime Minister Narendra Modi has decided to come here to seek blessings of Baba Kashi Vishwanath and also to seek blessings of the people, but he doesn't need to campaign much. But more than that, people here tell about the stories of development that have taken across Varanasi after Prime Minister Modi became the Member of Parliament here. And this is for everyone to see. We are here at Pappu Chai Wala, the famous Pappu Chai Wala, where Prime Minister also had tea last time when he came here. We'll speak to people also. There are few people who are sitting inside and they're regulars and they are, they are achievers in their own field. One is a former police personnel. One has, one had worked in Sahitya Kala Academy. So all of these people come here regularly. They have been coming here since childhood, and it is they who will tell us the stories how probably they have seen the transformation of the city as well. आपको लगता है, फर्स्ट लेट मी स्पीक टू मिस्टर चाय वाला फर्स्ट, आपको लगता है ऐसा कि प्राइम मिनिस्टर अब की बार आएंगे और आपके यहाँ दोबारा से चाय पियेंगे? अगर आ जाएंगे हम तो सोचेंगे कि मेरे पास भगवान आ जाएंगे. तो हर बार आते हैं प्रधानमंत्री तो आपके यहाँ चाय पी के जाते हैं. अगर इस बार भी आ जाएंगे तो हम सोचेंगे कि भगवान फिर हमारे द्वार पर आ गए हैं. आज नॉमिनेशन करने आ रहे हैं वो आपकी बात इसी बार के? नॉमिनेशन तो कल करेंगे, आज तो रोड शो करेंगे. आज रोड शो करेंगे जी. तो वो नॉमिनेशन करने आ रहे हैं तीसरी बार के लिए यहाँ से. और प्रस्तावक भी बने हैं पिताजी. आपके पिताजी प्रस्तावक बने? क्या नाम है उनका? पप्पू जी. पप्पू जी लड़के मनोज मैं हूँ. अच्छा. पप्पू जी वो हैं. तो अब की बार के प्रस्तावक वो हैं? हाँ, पिताजी हैं. पिताजी जी. So here you get a very breaking story. One of the proposers of Prime Minister this time is Mr. Pappu ji, father of Mr. Manoj ji of famous Pappu Chai Wala. This is the breaking update that we are giving you. But we'll just speak to a few of the people who are, resident of the city here as well. If I could just, अरे आप सब चाय पी लिए? चाय तो पी. आप लोग बताइए, क्योंकि हम लोग तो जब आते हैं तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखने को मिलता है, पर सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या लग रहा है सिटी में? एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव चेंज आया है पूरे बनारस में, क्या पूरे देश में आया है, और वो इंगित कर रहा है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा. हम इसी आशा में चल रहे हैं. अच्छा, आप क्या करते हैं और आपका नाम क्या है?
अनिल तिवारी, मैं हिंडाल्को से रिटायर्ड हूँ। 10 साल पहले रिटायर हुआ। अब अंदाज आप लगा लीजिए कि 70 साल उम्र है और अंदाज है जीने का। भैया हैं हमारे, बड़े अग्रज हैं, हमारे साथी, हम लोग पढ़े हैं, ये सीनियर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ कैंपेनिंग करने भी इतने नहीं आए हैं, जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको क्या लग रहा है कि क्यों जरूरत नहीं पड़ी? मोदी जी का काम बोल रहा है बनारस में, बनारस क्या देश में बोल रहा है, और पूरे दुनिया में जितना मशहूर वो हुए हैं, आज़ादी के बाद भारत में कोई प्रधानमंत्री इतना मशहूर नहीं हुआ। So the popularity of Prime Minister Narendra Modi is, because of the work that he had done. People say that there is a lot of cleanliness. The sanitation drive has changed the face of Banaras and Varanasi, as they call it, and also the development work that has taken place and the kind of economy that has seen the boost after renovation of Kashi Vishwanath corridor. That is, visible for everyone to see, and this is exactly why people say that Prime Minister may not come here. He may just come once because he is the Prime Minister of the country, has to campaign across the country, but we are there for him and we are his family. We will make sure that he will win with the record margin of votes. This is exactly what the people here are speaking across the city, not just here at Papu Chaiwala. Oh yes, Pragya, talking about the record margin, I think the last time around the Prime Minister won with a 4.8 lakh margin. BJP sources tell us this time, Mohit, they are eyeing a margin above 7 lakh. They say that has to be the real, milestone that they want to achieve. As we'll get Mohit, we'll also say good morning to two of our panelists joining us right now. We have Mr. Raj Gopalan and Lokesh Jindal, both with us. Good morning, gentlemen, and thank you so much for your patience. And with your permission, I want to quickly go back to Mohit, and I'll then come back to both of you, because it's important to get a sense of what Varanasi is feeling this morning. Varanasi again is a city, Mohit, that many would say has different sentiments today when it is looking at the Prime Minister, who many say does not need to campaign in his Karam Bhumi. He's looking for a record margin this time around. On the other side, you have Congress's Ajay Rai. This is also a seat from where Arvind Kejriwal had challenged the Prime Minister famously in 2014 only to lose. But having said that, Mohit, what is it that we do know about the Prime Minister's entire schedule of the roadshow and the nomination tomorrow? Well, you see, Prime Minister Narendra Modi will be reaching over here in Varanasi at around 6 p.m. And after that, the roadshow will start, which will be a 5-kilometer long roadshow. And finally, at the culmination of the roadshow, Prime Minister Narendra Modi will offer his praise to Kashi Vishwanath. Now, you were talking about the sentiments. I am right near Kashi Vishwanath Mandir, and these are the famous tea stores over here where people come and they discuss and talk about the election. Sir, ये बताइए कि क्या माहौल है काशी का इस बार? प्रधानमंत्री पिछली बार 4 लाख से ऊपर वोट से जीते थे, इस बार क्या माहौल है? रोड शो भी होगा, सब तैयारी हो गई है? नहीं, प्रधानमंत्री जी 5,51,000 कुछ वोट से जीते थे। इस बार बम्पर वोट से जीतेंगे। जो है पूरी काशी जो है भाजपामय हो गई है, और प्रधानमंत्री जी की कार्यप्रणाली इतनी अच्छी है कि देश जो है बहुत। कितना विकास हुआ है काशी, कितना बदला है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पतली पतली गलियां थी जब हम पहले आते थे, वो अब जाके खुली हो गई हैं। लोगों को कितना फर्क लग रहा है? वो कितना बड़ा फैक्टर रहेगा वोट देते हुए? जो सर पहले जो नैरो गलियां थी जो है, आज वो ब्रॉड हो गया है, और सारा गलियां एकदम दोनों टाइम जो है आपका झाड़ू लग रहा है। नीट एंड क्लीन काशी। नीट एंड क्लीन काशी। सर, आप लोग बताइए, आप सुबह आए हैं, एक चीज जानना चाहते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोग बात करते हैं, अजय राय की बात ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं ग्राउंड पे, क्यों? क्योंकि हमारे काशी की बहुत बड़ा ये भाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। और काशी का जो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति सांसद नहीं है बनारस के अंदर जो बनारस का विकास किया हो। जब से मोदी जी बने हैं बनारस बदल गया है। तो बनारस के वोटर बनारस के विकास में वोट देंगे एकदम। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड से स्वागत के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है। तो कांग्रेस क्यों नहीं दिख रही है सर यहाँ? कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस दिख रही है। कांटे की टक्कर है बनारस। कांटे की टक्कर आप कह रहे हैं? चलिए, आप मिले हमसे, कम से आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। अजय राय 2 बार हार चुके, तीसरी बार फिर लड़ रहे हैं, लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं कांटे की टक्कर होगा? कांटे की टक्कर है इस बार। जब 2 कदम पीछे जाता है जी, तो निश्चित तौर से दहाड़ता है जी। तो 2 बार वो पीछे जा चुके हैं, लेकिन इस बार दहाड़ करके आ रहे हैं। तो अजय राय इस बार दहाड़ेंगे लग रहा है आपको? निश्चित तौर पे, चूंकि इस बार जिस तरह सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है, क्या समझे? जिस तरह की विज्ञापन में हमारे
जनता की गाड़ी कमाई को। ये तो यहाँ लोग कह रहे हैं, जो मिल रहे कह रहे हैं कि विकास हुआ है, काशी कॉरिडोर का विकास कुछ नहीं हुआ है। हमारे मकान को पेंट करा करके टैक्स कई गुना बढ़ा दिए हैं। क्या समझे, इतने तरह का टैक्स लगा दिए कि यहाँ जनता कंफ्यूज है, जिंदा रहने को विकास समझ रही है। So that is the beauty of democracy, that every voice, remember, gets heard, every voice counts. And I'll just quickly thank both Pragya and Mohit for now. And also, we'll head into a quick break, but Mr. Rajgopalan and Lokesh continue to stay with us on the other side of this break. We keep our eyes focused on what's happening in Varanasi and also the big phase 4 of the polling that is underway.